یہ ایک آپ کے لیے اوپر والے نے آپ کو ایک نیا چانس, نئی اپرچونٹی آپ کو دی ہے. اس کو بڑے ہی کلوزلی سمجھیے گا, سوچیے گا اور اپنا اٹینشن اس کال پہ دیجیے گا. میں اس کال کو ٹرانسلیٹ کروں گا. جب ہمارے سی ای او انگلش میں بولیں گے, میں اس کال کو ٹرانسلیٹ کروں گا ہندی لینگویج میں, تاکہ آپ سب کو سمجھ آئے اور آپ سب کو انڈرسٹینڈ ہو کہ آج کی کال کا مقصد کیا ہے. اور یہ آج کی کال ہماری میتھر کی ہسٹری کی سب سے بڑی کال ہے. آج کی کال میتھر کی ہسٹری میں ایک سب سے امپورٹنٹ کال, جب کا میتھر سٹارٹ ہوا آج سے 4 سال پہلے, آج کی کال اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو سب سے امپورٹنٹ کال آج کی ہے. تو آپ سب نے اس کے اوپر ٹینشن پے کرنی ہے, چاہے آپ زوم کال میں ہیں, چاہے آپ یوٹیوب سے اس کو دیکھ رہے ہیں, چاہے فیس بک یا انسٹاگرام لائیو میں ہیں. تو میں آپ سبھی کو چاہوں گا کہ اب آپ مل کے ہم ویلکم کریں ہمارے بڑے ہی پیارے, ہمارے بڑے ہی ینگ اور فوکس سی ای او. I would like to welcome Mr. Dinesh, our CEO of Meether and M20, to please take over and go ahead and share all the exciting news with us. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you. I can see so many hands coming here on Zoom. I think that is the applause here online on Zoom. Fawad, thank you for the introduction so far. And yes, you have said it before. This is a very, very important call for Meether, for the community, for ourselves as a company. And before I'm going to start with the slides itself, ladies and gentlemen, as always, we are with the right thing on the right time. And maybe on my sweater and Mr. Fawa's sweater, you can tell we are coming into Q4 of 2024, and this is the best season out there for any business, because people are coming back from their vacations, people are coming out of summer and going into Q4, and you will see in every business a great movement upwards in Q4. So again, with the right thing on the right time and all together. So please translate this quickly and I will jump then into my slides. So first of all, آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں مسٹر جنیس اس کال کے اوپر, اور اسی کے ساتھ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سو فار کمپنی سکسیسفلی اپنی گروتھ روٹ کے اوپر ہے, اور یہ جو لاسٹ کوارٹر ہے ہمارے اس سال کا, آپ جیسے مسٹر جنیس نے کہا کہ آپ کو میرے اور مسٹر فواد کے سویٹر سے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے گروتھ کا, یہ ٹائم آنے والا سیلیبریشن کا ٹائم ہے. اور ویسے بھی ہمارے بہت سارے ہولی ایونٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آنے والے سمے میں آ رہے ہیں ہماری طرف. اسی کے ساتھ ہم نے یہی ٹائم کو یوٹیلائز کر کے اپنا فیوچر بلڈ کرنا ہے, اور آپ سب لوگ صحیح پروجیکٹ میں ہیں اور صحیح ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ کی لیڈرشپ بالکل ٹھیک ہے. So let's not delay too much and jump straight into my slides. I hope you can see my screen right now and the slides. Is that correct? Yep, correct. Yes. So welcome to this soft launch of Probot X, the updated version of our latest product and powered by Meether, as you can see. What is Probot X and what can you expect from Probot X shortly? But before that, I just want to say this is something that the community itself requested for a long time, and we developed this for the past months. We started in January testing it until today. Even some of you in the call already tested this product with us together, and I'm very proud that I can say today is the official soft launch of Probot X, and after this call you can start using it. So let me jump into the first slide, but before that, please translate. جیسا کہ آپ سبھی دوستوں کو پتا ہے کہ یہ جو آج کی کال ہے, اس کال کو مین مقصد ہے کہ ہمارا جو سافٹ لانچ ہے ہماری لیٹسٹ پروڈکٹ کا, جو کہ ہے پروبوٹ ایکس. آپ سبھی کو پتا ہے کہ پروبوٹ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ کافی سمے سے کمپنیز کے اوپر کام کر رہی ہے.
اور آپ میں سے سب نے سنا ہے کہ پروبوٹ پہلے بھی کمپنی کا یہ ایک پروڈکٹ تھا جس کو کمپنی نے اس کو ریویمپ کیا, دوبارہ سے اس کے اوپر نئی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا, اور اس کے بعد پروبوٹ ایکس کے نام سے اب کمپنی دوبارہ اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا رہی ہے. تو پروبوٹ ایکس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارے پاس ایک نیا لیٹسٹ ایکسٹینشن ہے میتھر کے ایکو سسٹم کا, ایک نیا پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے پروبوٹ ایکس. So, quick introduction into the platform, into the tool itself. It is an automated trading platform to make your life easier out there in the markets. You know, before with Cleos together, you are able to learn everything by yourself. But there are people, for example, who don't have time, who don't have the right experience, or who just don't want to deal with the markets out there. For them, you can use Probot X. And we are using inside different strategies that I will break down in the next slides for you. So with that, you have an overall platform where you can jump into Forex, indices, commodities, and cryptocurrency market and be part of a successful trading team. جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس سال کے شروع میں جنوری کے اندر ہم نے اپنا جو پلیٹ فارم ہے, ایجوکیشنل پلیٹ فارم کلیوس, وہ لانچ کیا. جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا جنوری کے ایونٹ کے اندر جو کہ برج العرب کے اندر تھا, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کمپنی نے یہ جو کلیوس ہے, جو ہمارا ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے, اس کو لانچ کیا اور اس کے اوپر کافی سمے سے ٹیسٹ رن کیے. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو اکتوبر یعنی کہ 10 ماہ سے کنسسٹنٹلی کمپنی نے اس کے اوپر ٹیسٹ رن کیے, اس کے اوپر اپنا پراپر ریسرچ کی کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت فائدہ مند پروڈکٹ ہونے والا ہے. اور اب پروڈکٹ جو پروبوٹ ایکس ہے, یہ کام کیسے کرے گا؟ پروبوٹ ایکس ایک آٹومیٹڈ پلیٹ فارم ہے آپ سب کے لیے. کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا. یہ فوریکس کو, انڈیسز کو, کموڈیٹیز کو اور کرپٹو کرنسیز کو ٹریڈ کرتا ہے. اور اس کے اندر زیادہ مسٹر ڈینیس بریک ڈاؤن کریں گے نیکسٹ سلائیڈز کے اندر. یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے یہ ہے کیا ہے, یہ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اسی طریقے سے اگر کلیوس کی بات کی جائے تو کلیوس میں جو ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں وہ ہے فوریکس ہے, مرفیز ہے, انڈیسیز ہیں, جیمز ہیں, کموڈیٹیز ہیں. اب یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ کیسے کام کریں گی, ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ نیکسٹ سلائیڈ میں مسٹر دنیش آپ کو ایکسپلین کریں گے. So what is Forex, foreign exchange markets, and what are the benefits or the key points to operate in a market like that? So Forex out there, ladies and gentlemen, is having currently a daily, and I repeat again, daily turnover of about 7.5 to 8 trillion in a day. So you can imagine how big that market is and how many people, companies, and other parties participate into this market. The liquidity is high in volumes, as I said before, around 8 trillion daily turnover. And the market in Forex is open not 24/7, but 24/5. This means from Monday till Friday, the Forex market is open for trading, for daily operation, and they have different sessions going on. For example, London or New York sessions that you can trade in. It also offers leverage options, so you can leverage your capital. You can use and choose diverse currency pairs that allow you a diverse portfolio of trading, and because of its big liquidity, it's a volatility market that has price movements on a short time frame but also on long time frame, since in the last key point you can see it is connected and influenced globally by economies, by companies, by let's say
different kind of political parties and many more things. Also, central banks play a big role in that. So Forex is a great opportunity to step into a global market and be part of something that is happening day by day in trillions of volume. तो अगर हम देखें कि क्लियोस के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उसमें सबसे पहली जो स्ट्रेटजी को यूज किया गया वो है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आप, ये वो मार्केट है जिसके अंदर 7.5 से 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स डेली ट्रेड होता है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये एक बहुत बड़ा फंड है, ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड होता है। क्योंकि हम सभी क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप क्रिप्टो का ऑल वॉल्यूम देखें कि पूरा क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। ओवरऑल जो पूरा क्रिप्टो का जो टर्नओवर है, जो मार्केट कैप है, वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम फॉरेक्स को कंपेयर करें तो इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर एक दिन के अंदर ट्रेड करता है। और इसके जैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है 7 दिन, लेकिन ये काम करता है सिर्फ 5 दिन। और 5 दिन जैसा कि मंडे से फ्राइडे जब बड़े बैंक्स खुलते हैं और बैंक्स बंद होते हैं, उसी तरीके से फॉरेक्स भी काम करता है बैंक्स के साथ, क्योंकि ये अलाइन है। तो जब भी बैंक्स वर्किंग में आते हैं तब ही ये भी वर्किंग में आता है। इसी के साथ हमारे पास इसमें ऑप्शन रहती है कि क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी लेवरेज की ऑप्शन है, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इसके अंदर जो मंजे हुए ट्रेडर्स हैं, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, शायद आप कुछ लोगों को जानते भी होंगे, जो एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट डेली, वीकली और मंथली बुक करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये वो चीज थी जो हमारे इकोसिस्टम से शायद मिस थी, जिसके ऊपर आप सबने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे लोगों की भी रिक्वेस्ट हमें आई कि सर आप फॉरेक्स के अंदर भी टैप इन करें, आप इस प्रोडक्ट को भी मीथर का इकोसिस्टम का हिस्सा बनाएं। तो आज हमारी टीम ने इसका डिसीजन लिया और इसको आपके सामने ऑफिशियली रखा, ताकि आपको बताया गया कि मीथर एक फुल फ्लेज पैकेज है और फॉरएवर ग्रोइंग प्रोडक्ट है। अगर इसकी वोलेटिलिटी की बात करें तो वो, क्योंकि ये एक हाईली वोलेटिल इंडस्ट्री है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन रहती है कि अच्छा ट्रेडर, जो अच्छे ट्रेडर्स हों, जो मार्केट को समझते हों, वो सही समय का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर से अच्छा बेनिफिट भी बुक करते हैं। और यही पिछले 10 माह से हमने अपने ट्रेडर्स को देखा, उनको स्टडी किया, उनकी ट्रेड्स को देखा कि वो किस तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट बनाते हैं। और उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर की। ओवर टू यू सर। Indices and commodities. Let's start with indices. Indices are, let's say, a basket, or let's say you take on plate and put on the top 500 companies in the US. As you can see, S&P 500, and with a single transaction you can trade these 500 top companies in the US. So indices are something combined in a basket that you can trade within one transaction, and it offers lower volatility for you as a trader, because you will see not that big movements in these markets and assets, and the economic indicators, as you can see, are a reflection of the health of the economies or the companies itself. Commodities are the base of the global economy out there. These are things like gold, oil, and wheat, for example. So these are things that are so commodities you can trade
back to you, Mr. Fawad. Sorry, I lost. Yeah, sure. No, it's okay. I connection. think you must have issue, no problem. So अगर हम indices की बात करें तो indices क्या है? अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं आप सभी को कि इंडस्ट्रीज वो हैं कि जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं, अब इसको ऐसे समझिएगा कि आज इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो ब्रांड हम जिसकी अगर बात करें तो जो वन ऑफ द टॉप ब्रांड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को ऑन बोर्ड किया। उन सब कंपनीज को ऑन बोर्ड करके उन्होंने एक 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 प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक पैकेज कह सकते हैं, पैकेज तैयार किया। उस पैकेज का नाम रखा S&P 500। तो अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट क्या है? यूएस मार्केट ने छोटे छोटे कंपनीज को ऑनबोर्ड किया, जिसके जो अगर हम बोले तो छोटे इन सेंस ऐसे कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं यूएस के अंदर या दुनिया के अंदर, जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनको ऐड किया, उसका एक पैकेज बनाया, उसका नाम दिया S&P 500। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हाई वोलेटाइल नहीं है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आप रात को देखेंगे 20% भी ड्रॉप होगी, 30% भी एक दिन में ड्रॉप होगी और वापस बाउंस बैक करेगी। इंडस्ट्रीज में क्या है, इंडस्ट्रीज इतना बड़ा हाई जंप नहीं लेती, इसलिए जो भी ट्रेडर्स हैं उनके पास इसके अंदर एक हेज रहता है, एक एज रहता है कि वो इसके अंदर भी ट्रेड करें और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करें जिसमें लॉस के चांसेस काफी कम रह जाते हैं, क्योंकि ये हाई वोलेटाइल नहीं है, तो ये इतने मैसिव मूवमेंट्स नहीं रहती इसके अंदर। तो इसलिए ये एक बड़ी ही अच्छी ऑप्शन है। और ये जब भी हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो जो भी दुनिया के बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, हम बात करें बड़े बैंक जेपी मॉर्गन्स की, तो वो इंडस्ट्रीज को प्रेफर करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस पे बिलीव करते हैं, वो ज्यादा बिलीव करते हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर को कमोडिटीज के ऊपर, क्योंकि उनको ये पता है कि ये तो ऐसी चीजें हैं जो फॉरएवर रहने वाली हैं। ये वो ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म एक लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी। अब कमोडिटीज क्या है? कमोडिटीज आप जैसा कि कमोडिटीज ऑयल जिसको हम बोलते हैं ऑयल, चाहे पेट्रोल कहिए, डीजल कीजिए, क्रूड ऑयल कहिए, कोई भी ऑयल इसके अंदर आएगा। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, इसी के साथ जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं वो भी कमोडिटीज की कैटेगरी में फॉल होती है। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए, जब तक लोग जिंदा हैं उनको ये अशिया, ये चीजें चाहिए सर्वाइवल के लिए। हमें पेट्रोल चाहिए गाड़ी के लिए, ए टू बी जाने के लिए, हमें खाने के लिए गंदम चाहिए, वो भी कमोडिटीज में ही एलोकेट होती है, इसी में ही फॉल करती हैं। हम गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड बाय करते हैं, गोल्ड को होल्ड करते हैं, गोल्ड को बाय एंड सेल करते हैं, ये भी फॉल होता है कमोडिटीज के अंदर। आप सब में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शॉप से गोल्ड बाय करेंगे या किसी ने किसी को गिफ्ट दिया गोल्ड, अब उसने होल्ड किया 2 साल पहले, अगर आज वो गोल्ड बेचेगा तो वो एक बड़ा अच्छा हैंडसम प्रॉफिट में गोल्ड को सेल करेगा। तो ये ऐसा ही है, कमोडिटीज भी ऐसी ही एक ट्रेडिंग है, लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर ब्रोकरेज के थ्रू, एफसीए रेगुलेटेड जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू होता है, तो इसके अंदर आपके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास एक एजुकेटेड टीम है, एक आपके पास डेडिकेटेड टीम है जो कमोडिटीज को, इंडस्ट्रीज को, फॉरेक्स को समझती हो, जो इन इन इंडस्ट्री के ऊपर जिनकी प्रॉपर ग्रिप हो, वो जब इसके अंदर ट्रेड करती हैं तो आई थिंक इसके अंदर सक्सेस की जो रेशो है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली इस मार्केट को क्लोजली वर्क भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं और इससे बेनिफिट भी उठाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे लिए एज मेथीरियन एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी ने एक सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि इससे रिलेटेड जो जो भी है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो फॉरेक्स इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रीज हो, कमोडिटीज हो, सबको टैप किया और सबके अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट लिया। So I think it's a great opportunity, Mr. Rees. Over to you, sir. Yes, back on track, and sorry for a quick interruption into this call. But last but not least, what are now the key features for this platform, for this tool? So you can see we have different strategies for different markets. So if you want to be successful in trading, it is very hard
to focus on different markets and assets. That's why we split it up the traders and place them in the most strength that they have in the market that they are most successful in, with Morpheus, Crisis, and Gems, and more will come later on. You have an automated trading tool together with advanced algorithms, so AI, but together with human beings. So human and AI together can succeed in this market because both are operating in a different way. Also, you have seen before multi-asset support with seamless trading across different asset classes. This means the capital that you are going into the markets is across different assets and different markets and not focused on only one market. So this reduces also the risk factor of the product itself. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जिसके ऊपर कंपनी ने फोकस किया: मोर्फियस, क्लियस और जेम। मोर्फियस, क्रिसोस एंड जेम्स। अब इसके अंदर जैसा कि ब्रेक डाउन किया गया आप सभी के लिए कि हम किस तरीके के साथ इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और इसके अंदर बेनिफिट उठाएंगे। सबसे पहले जब प्रोबोट हमने लॉन्च किया कुछ समय पहले, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था कंपेयर टू जो प्रोबोट एक्स आपके सामने आज है। उसकी रीजन ये है कि आज का प्रोबोट एक्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड किया गया। 10 माह की टेस्टिंग इसके ऊपर की गई, इसके अंदर एआई को यूज किया गया और उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रेडिंग को भी इसके अंदर लेके आया गया। इसका मकसद ये है कि हमारे पास एक लेवरेज हो एआई के लिए भी और जो इसके अंदर ट्रेडर्स काम करेंगे उनके लिए भी। और हमने रिस्क डिवाइड किया इन 2-3 चीजों के ऊपर, 2-3 फैक्टर्स के ऊपर, और इसको ऑटोमेटेड बनाया अपनी कम्युनिटी के लिए। देखिए आज क्या होता है, आज बहुत सारी कंपनीज आपको ऑफर करेंगी सिग्नल सर्विसेज, बहुत सारी कंपनीज आपको ऑफर करेंगी ट्रेड आइडियाज। वो तो ऑलरेडी मीट क्लियर्स कर रहा है जो हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अब उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आज आप चाहें कि आप खुद ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन रहने वाली है, आप खुद भी ट्रेडर बन सकते हैं। हमारा जो क्लियर्स प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, कंसिस्टेंटली कॉल चल रही है, उसके ऊपर कंसिस्टेंट जूम कॉल है। जो हमारे हेड ट्रेडर है मिस्टर क्लिफ, वो कंसिस्टेंट कॉल ले रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख भी सकते हैं। लेकिन वो दोस्त, वो लोग जो बिजी हैं मार्केट के अंदर, जो बिजी हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, जो बिजी हैं अदर एक्टिविटीज के अंदर, उसके उनके लिए कंपनी ने क्या किया, मैनेज ट्रेडिंग की ऑप्शन दे दी आप सबके लिए। अब आप सबके पास ऑप्शन है कि क्या आप सीखना चाहते हैं खुद, तो आप क्लियर्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। अगर आप मैनेज ट्रेडिंग की ऑप्शन पे जाना चाहेंगे कि कंपनी आपके फंड्स को मैनेज करे और अपने जो प्रोबोट एक्स के थ्रू जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, मोफियस, क्रिसोस और जेम्स, उनको यूज करते हुए एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप तक पहुंचाए, तो आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे। जिस तरीके से हमने मीथर को मिलके सक्सेसफुल किया, पिछले 4 साल से हमने एक हिस्ट्री बनाई, इसी तरीके से प्रोबोट एक्स में भी हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहने वाली है, आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे। ओवर टू यू सर। So what are the benefits if you are a trader, if you are someone who is already in the markets? You have the possibility for a stress-free portfolio management, since we split up the portfolio to different traders, to different parties, and it is not combined into one single portfolio. And you will have a lot of support for beginners, also for experienced traders. Together with Cleos itself, you can extend your knowledge and benefit from that side. And with the platform itself as Probot X, you can not only just join, but later on, like on Cleos, you know that if you are good enough performing in the markets,
you can become a trader by yourself. Here on ProBot X, we are onboarding all the time new traders, and this possibility is also out there for the community. अब वो लोग जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हैं, जो ऑलरेडी कमोडिटीज को या इंडस्ट्रीज को ट्रेड कर रहे हैं, अब ये मैसेज उन सब के लिए है. अगर आप समझते हैं कि आप एक ट्रेडर हैं और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि प्रोबोट एक्स सबके लिए ओपन है. ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए. अगर आप एक अच्छे ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो हम आपको भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं, अपने साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सकते हैं. और आप कंपनी आपको भी ऑप्शन देगी कि आप भी आइए मिलके हमारे साथ प्रोबोट एक्स के अंदर काम कीजिए. कंपनी आपकी ट्रेड्स को भी वॉच करेगी. जैसे जो पुराने ट्रेडर्स हैं, उनको कंपनी ने 10 माह टेस्ट किया. 10 माह टेस्ट करने के बाद जब उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट देखी, कंपनी ने उनको ऑफर किया कि अब आप कंपनी के पोर्टफोलियो के ऊपर काम करेंगे. इसी तरीके से अगर आप भी समझते हैं कि आप भी एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और आप इस इंडस्ट्री को समझते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहने वाली है. आप भी आइए, हमारे ट्रेडर्स जो हेड ट्रेडर्स हैं वो आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपकी स्ट्रेटजीज को समझेंगे. जब आप प्रॉफिटेबल होंगे तो आप मिलके, आप ऑन बोर्ड होके एज अ ट्रेडर प्रोबोट में एक्स भी काम करेंगे. ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी रहने वाली है उन सब के लिए जो समझते हैं कि वो ट्रेडर हैं और अपनी ट्रेडिंग से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं. The trading strategies we mentioned before are Crisis, Gems, and Morpheus. So basically, Crisis is for Forex, for currency pairs out there. Gems is for commodities, especially we trade a lot of gold, and Morpheus for indices. So there are trading signals and there are trading pairs like the S&P 500. These are the main strategies that are followed and sticked to ProBot X. और जैसा कि आपको ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि जो लोग क्लियोस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्लियोस कंसिस्टेंटली रन कर रहा है इन 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर, जो है क्रिसोस, जेम्स और मोफियस. इसको हमने रन किया पिछले 10 मंथ से. इसके ऊपर हमने स्ट्रेटजीज रन की, डिफरेंट ट्रेडर्स को यूज किया. और जो क्रिसोस है वो इंटायरली फोकस है फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर. जो जेम्स है वो मेनली फोकस है गोल्ड के ऊपर. और जो मोफियस है वो है इंडस्ट्रीज के ऊपर. अब इन सब इंडस्ट्री से ऑलरेडी जो लोग क्लियोस ग्रुप्स का हिस्सा है, टेलीग्राम ग्रुप्स का हिस्सा है, आपको ऑलरेडी कंसिस्टेंटली मैसेजेस आ रहे होंगे, आपको ट्रेड आइडियाज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ऑलरेडी. और जैसे मिस्टर क्लिफ अपनी जूम कॉल करते हैं, उसके अंदर भी आपके साथ ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करते हैं. तो ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो कंपनी ने आपके साथ भी शेयर की एज अ ट्रेड आइडियाज. और इन स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए जो मैनेज ट्रेडिंग की ऑप्शन थी, उसमें भी कंपनी यही स्ट्रेटजीज यूज करेगी. अगर कोई समझना चाहे कि मैं कंपनी को फंड दूंगा तो कंपनी उस फंड का क्या करेगी, तो इस स्लाइड को समझ लीजिएगा. ये वो स्लाइड है जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि कंपनी फंड डिवाइड करेगी ताकि रिस्क डिवाइड हो जाए. एक इंडस्ट्री के अंदर क्रियोसोस या जेम्स या मोफियस में एक इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया गया, इसको स्प्रेड किया गया ताकि रिस्क स्प्रेड हो, हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले आने वाले लंबे समय के लिए. तो आई थिंक अगर मीथर की बात करें, मीथर ने ऑलवेज लंबे समय की बात की. मीथर ने ऑलवेज 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात की. इसी तरीके से जो भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो इस चीज को जहन में रखती है कि ये कितने लंबे समय तक चलेगी. तो आई थिंक प्रोबोट एक्स की बात करें तो ये एक बहुत लंबा अरसा चलने वाली है और आप सबके लिए एक बड़ी ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. Yes, for crypto, there is a special strategy. Why is it special? Because crypto itself is still low in volumes if you compare it to Forex. And I think you mentioned it before, Mr. Fawad, the whole crypto market itself is only a part of the daily turnover of
Forex. So for crypto trading, you have to implement different strategies. And what is the main strategy in a nutshell for crypto? When the markets are moving in a direction that we don't want, we will convert back the assets in a safer asset. For example, you can switch back in USDT. Why is that so? Because in cryptocurrency, you never know what will happen next, not in the market, but out there in the world. So, for example, political parties or government restrictions can affect the market. So it is very important to have a safe place to move the assets if something like that happen. So in a nutshell, the strategy for crypto is to save the profits as much as possible, and in difficult market situations to go out of the market and go into a safe spot. इसी के साथ अगर देखा जाए क्रिप्टो के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी, क्रिप्टो के अंदर जो मेन स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी है कंपेयर टू फॉरेक्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ही कम है। अगर क्रिप्टो का होल मार्केट कैप देखा जाए तो वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर है, और जो कि बहुत ही फॉरेक्स के तो आई थिंक 20% है। अगर ओवरऑल ये कमोडिटीज को देखा जाए, फॉरेक्स को, इंडस्ट्रीज को देखा जाए, तो इसमें जो स्ट्रेटजी है जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, जिसको मीथर ने जो गैप देखा उसको फिल इसलिए किया गया, जैसे मिस्टर दनीश ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि हम प्रॉफिट शेल्फ से ऑफ करेंगे, जो प्रॉफिट बनेगा हम ऑफ करेंगे जब मार्केट स्ट्रेटजी हमारे अगेंस्ट जाएगी। कि देखिए, जैसे कि लोगों को दिखाया जाता है कि मार्केट पंप होगी, पंप होगी, पंप होगी, सेम टाइम मार्केट डंप लेती है। और जब लोगों को डराया जाता है क्रिप्टो के अंदर कि अब मार्केट डंप होगी, डंप होगी, एग्जैक्ट उसी समय मार्केट को पंप किया जाता है और लोगों को लिक्विडेट किया जाता है। इस स्ट्रेटजी को हमारी टीम्स ने बड़े ही करीब से देखा और बड़े ही अच्छे तरीके से समझा, और इसको यूटिलाइज ऐसे किया कि जब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा हम वो प्रॉफिट शेल्फ से ऑफ करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे बिटकॉइन का 1 लाख पे जाने का, हम वेट नहीं करेंगे बिटकॉइन का 80,000 पे जाने का। जब प्रॉफिट होगा वो शेल्फ से ऑफ करेंगे, ताकि इन केस अगर मार्केट डंप भी ले, हम एक अच्छे स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें और एक अच्छे लेवल के ऊपर खड़े हों। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं, ना ही हम मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ना ही हम कंट्रीज की जो रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल कर पाते हैं। अब जैसा कि यूरोप में रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है क्रिप्टो को लेके, इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस चीज को भी प्राइस अफेक्ट करती है। जब कोई कंट्री कोई स्टेटमेंट देती है फॉर क्रिप्टो के ऊपर, तो वो भी प्राइस को काफी इफेक्ट करती है। तो इसलिए हमने ये भी स्ट्रेटजी को जहन में रखते हुए अपनी ये जो क्रिप्टो गाइड एक्स स्ट्रेटजी है इसको लॉन्च किया, ताकि हम एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमा सकें, लंबे समय तक एक प्रॉफिट बना सकें। About the platform itself, security and trust is very important. So for the user, data and the funds itself, we have advanced tools and security features implemented. We have partnership with trusted brokers who are managing the funds for a secure trading. Details on the risk management and customization options available. So that means for you as a user, you will have the possibility to set and manage your risk and reward option. And for example, if you want to pay out your funds, there is a whitelisting process for new wallets for 24 hours. This means that if someone would come into your account, they cannot withdraw instantly. This is a safety
a safety tool for you to secure the funds. So the platform itself is secured, and the data and funds as well. अगर इसकी बात करें सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, जो कि सबसे बड़ा इशू है आजकल के समय में, और अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक आप सबसे ज्यादा इसको समझना किसी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर तो सिक्योरिटी और ट्रस्ट का इशू जो है वो 10 टाइम्स, वो 10 गुना ज्यादा है। और हम सभी समझते हैं कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना है जो सिक्योर हो, जो हमारे फंड्स को प्रोटेक्ट करे, जो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट दे। तो आई थिंक मीथर ने ये 4 साल के समय में कर दिखाया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जो सिक्योर भी है, कंसिस्टेंट भी है, और लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक चलने वाला प्लेटफॉर्म है, और जो लंबे समय तक चलेगा। इसलिए हमने जो अदर कंपनीज के साथ एसोसिएट किया अपने आप को, इसमें चाहे ब्रोकर्स ले लें, चाहे इसमें रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज ले लें, तो हमारा जो मेन गोल है वो यही है कि हम अपनी टीम्स के, अपनी कंपनीज के, अपने लोगों को जो फंड्स हैं उनको सिक्योर करें, ताकि हम एक लंबे समय तक काम कर सकें। The risk management of the capital itself has its own strategy, ACVD. What does it mean? It's breaking down here. So automated and human managed. As I mentioned before, the platform itself is operating not only with AI, but also with human interaction. Why is that so? Because in the past, maybe you have seen that a lot of people or a lot of companies try to build the perfect AI trading bot. But there is one issue with only AI trading bots, because these don't have an overall view of the markets or the global economy out there. So that's why we combined an AI tool in trading and human being together. So there is always a algorithm behind the trading combined with a human being. Capital protection, all traders and the algorithm itself has a strict stop loss and risk limit law inside, so they have to stick to these restrictions, otherwise they can't place the trades themselves. Also volatility control, that's why you need a human inside. Together with the benefits of AI, they can have a clear overview about the volatility in the current market that they are trading on and drawdown limits. It is very, very important to keep your drawdown in a frame that will not have a big effect on the capital itself if the trade should go in a negative direction. So with that risk management strategies and many more different rules and limits for the algorithm and the traders themselves, the capital itself is in a great position and not in a risky situation, because if you don't handle risk in the markets, it can come straight in the opposite direction of the portfolio. Because imagine you place trades and out there in the economy something is happening. So without these rules, your portfolio could be at risk, and we have a lot of them for our traders and for the algorithm. I think this is very important slide. So Yeah. I will say it. I will take some time. देखिए ये जो स्लाइड है, ये रिस्क मैनेजमेंट, आई थिंक सो फार सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये रहने वाली है कि ये कहीं ना कहीं आप सबका क्वेश्चन रहेगा, या लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं अगर फंड डिपॉजिट करूंगा तो इसमें रिस्क क्या है, इसमें मेरा रिस्क मुझे बताइए कि मेरा रिस्क क्या है। तो इसको आपने बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है कि इसके अंदर रिस्क क्या है। कंपनी ने रिस्क को अवॉइड करते हुए ये किया कि इसमें एक स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की।
وہ اسٹریٹجیز کیا تھی کہ جیسے آپ کو میں نے شیئر کیا پہلے کہ یہ ایک آٹومیٹڈ بوٹ جو کہ ہیومن مینج آٹومیٹڈ بوٹ ہے اے آئی کے تھرو، اور اس کا جو الگوریدم ہے وہ آلریڈی ڈیزائن کیا گیا. جو ہمارے ایک پروفیشنل ٹریڈنگ ٹیم ہے انہوں نے اس کا الگوریدم ڈیزائن کیا تاکہ اس کی جو ٹریڈز ہیں وہ آٹومیٹک ایگزیکیوٹ ہوں. جب بھی ٹریڈز کا سگنل ہٹ ہو ٹریڈ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے. لیکن جو لوگ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں وہ بھی اس کو واچ کریں گے ان کیس کوئی بھی دنیا میں کوئی چینج آئے، کہیں پہ وار سٹارٹ ہو جائے، کہیں پہ کچھ بھی ہو، تاکہ وہ کمپلیٹلی کلوزلی کہیں پہ فلڈ آ جائے، کہیں پہ زلزلہ آ جائے، کہیں پہ سیلاب آ جائے، دنیا میں کوئی بھی بڑی ایسا کچھ ہو جس کی وجہ سے فائنینشیل مارکیٹ جو کہ موو ہو سکتی ہے رانگ ڈائریکشن میں اگینسٹ ہماری اسٹریٹجی کے، اس کو اوور لک کرنے کے لیے ہم نے ہیومنس کا بھی استعمال کیا، نہ صرف اے آئی کے اوپر فوکس کیا، تاکہ دونوں کو ملا کے ایک ایسا پروڈکٹ لانچ کیا جائے جو کہ ایک فل پروف پروڈکٹ ہو. اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنے جتنی بھی ہماری ٹیمز رہنے والی ہیں ان کو کلیئر ریسٹرکشن، ان کو جو انسٹرکشنز دی گئیں کہ اپنا اسٹرکٹلی اپنا سٹاپ لاس یوز کیجئے، اور تاکہ ہمارے جو بھی مارکیٹ اگینسٹ بھی جائے تو ہمارے جو کمپنیز کے فنڈ، جو لوگوں کا فنڈ ہے وہ آلویز سیکیور رہے، اور تاکہ آپ کے پاس یہ ایکسیس رہے کہ آپ کے فنڈ آپ کے پاس کلیئر ہوں. اس کے ساتھ آئی تھنک ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایکسیس رہنے والی ہے کہ آپ جب چاہیں، جب بھی آپ کا دل کرے آپ اپنے فنڈز کو وڈرا کر پائیں گے. یہ بات کو سمجھیے گا، آپ جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ نے فنڈز وڈرا کرنے ہیں، کمپنی نے آپ کو آپشن دی کہ آپ جب بھی چاہیں آپ اپنے فنڈز وڈرا کر پائیں گے اس کے اندر سے. اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اب آپ نے فنڈز ڈپازٹ کیے تو آپ کو 6 ماہ ویٹ کرنا پڑے گا، 1 سال یا 2 سال. اس کے اوپر فنڈز کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں رہے گی. آپ جب چاہیں گے آپ اپنے فنڈز کو وڈرا کر پائیں گے. تو آئی تھنک سب سے بڑا رسک مینجمنٹ تو یہی ہے کہ آپ کے فنڈز آپ کی ایکسیس میں ہیں، آپ جب چاہیں گے ان کو وڈرا کر سکیں گے. So, quick user testimonials, but I don't want to go too deep into them. I just want to tell you and mention, since I said before, some people are also in this call from our community who had the possibility to and the opportunity to test this since a couple of months. And I asked them personally in our meetings in Dubai, and they are more than happy. So since January, we are back testing all the time the traders, the system itself. We are in the markets for the past 12 months, and successfully we back tested the strategies, the traders, and the platform itself. And the outcome is amazing, and I'm very proud to have the soft launch today and give this opportunity to our community members. یہ کچھ ٹیسٹیمونیلز ہیں جن لوگوں نے یہ پروڈکٹ کو یوز کیا پچھلے کافی مہینوں سے، اور انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا جو کہ مسز ڈینس نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا. اور آپ سبھی لوگ کنسسٹنٹلی میرے سے مل رہے ہیں دبئی کے اندر، اور آپ سب کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور آپ کی ایکسائٹمنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. جس طریقے سے آپ سب لوگ ایکسائٹیڈ ہیں ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو لوگ ہماری پروڈکٹس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں پچھلے 10 ماہ سے، وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس پروڈکٹ کو لے کے. تو آئی تھنک یہ ایک ون ون سچویشن ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم نے مل کے اس کے اوپر کام کیا، پچھلے 10 ماہ دیے، اور اس کے بعد آج ہم اس کو آفیشیل سافٹ لانچ کے پروسیس کے اندر ہیں. So the project summary of Probot X, what is the outcome of this product, of this extension in our ecosystem? In a simple sentence, Probot X is the future of trading, smart, simple, and powerful. For you out there, it is the opportunity again for the people who missed out before since the beginning of Mether. It is something new. It is a small gap in the ecosystem that was missing, and a lot of people requested. So we, as I said before, back tested, we developed
and we are finally launching this great and amazing platform for you as an extension in our ecosystem. So with this, you have the opportunity to join easily in a market out there that is making trillions of turnover daily, in a market that is, in my opinion, the most exciting one, because it is every day, every minute and second moving and developing out there. Many things will join Probot X in the future. You will see the different tools that we're gonna add. But as a sum up, this is something that you can use easily, stress-free and hands-free, and a great opportunity for every member in this community. देखिए, अगर हम इसकी समरी की बात करें, इन अ नटशेल बात करें, अगर बात को हम बिल्कुल क्लोजिंग स्टेटमेंट जो मिस्टर डेनिस ने दिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब की समझने के लिए कि देखिए, ये प्रोबोट एक्स मीथर के इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है. एक नया जो हमने ऐड किया अपने इकोसिस्टम के अंदर, वो है जो प्रोबोट एक्स को हमने ऐड किया, और ये ऐसे ऐड किया कि आप सबके लिए हैंड्स फ्री, ताकि ना आपको स्ट्रेस लेना पड़े कि आप बैठ के अब हर रोज जूम कॉल के अंदर आएं. क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों से हम डेली मुलाकात करते हैं, आप सभी लोग मिलते हैं, आप अपना फीडबैक, अपनी टीम्स का फीडबैक हम तक लेके आते हैं, मिस दनीस तक लेके आते हैं कि आपकी टीम्स की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं, आपकी टीम्स की क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरत है. तो आई थिंक अगर सबको हम अगर सामने रखें, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके लिए बेनिफिट है, जो सबके लिए एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसी के साथ आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे, आई थिंक अगर मैं काउंट करूं तो मुझे एक रात चाहिए काउंट करने के लिए कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने जिन्होंने बॉट्स लॉन्च किए और कंपनीज को क्लोज किया, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और बाद में जो लोगों को रिटर्न्स नहीं दिए. इन सब लोगों में और हमारे में क्या डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सब लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपका भी क्वेश्चन है कि देखिए, अगर मैं इसके अंदर आता हूं, मेरा क्या बेनिफिट है. तो देखिए, आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट मीथर का इकोसिस्टम है. मीथर ने अपनी कंसिस्टेंट का वर्क से ये बताया दुनिया को, ना सिर्फ आप सबको, मिथेरियंस को, बल्कि दुनिया को, कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा 4 साल से, और जब जब मार्केट की जो नीड होगी, जो मार्केट में जरूरत होगी, उन प्रोडक्ट्स को उस टाइम पे, उस समय में ऑनबोर्ड करेगा. देखिए, प्रोबोट हमारा एक पुराना प्रोडक्ट है. अगर कंपनी चाहती तो ये उसी वक्त इसको रीलॉन्च करती, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया. इसके ऊपर एक वर्किंग की गई, इसके ऊपर एक टीम बैठाई गई, जिन्होंने इसके ऊपर लगभग 1 साल काम किया, लगभग 1 साल स्ट्रेटजीज को डेवलप किया, लगभग इसके ऊपर 1 साल टेस्टिंग की. और जब हर चीज से ग्रीन सिग्नल आया, जब सब ने मिलकर इसके ऊपर एक 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 ट्रस्ट बिल्ड किया, ट्रस्ट डेवलप किया, उसके बाद ही कंपनी ने कहा कि अब हम अपनी कम्युनिटी तक ये प्रोडक्ट लेके आएंगे. क्योंकि कंपनी भी नहीं चाहती कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया जाए जिससे हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट ना हो. क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो गोल है, जो हमारा एम कॉइन, हमारा राइजर को टू द मून लेके जाना है, वो हमारा मेन गोल है. उसको भी हमने अपने जहन में रखना है. ये हमारी एक एक्सटेंशन प्रोडक्ट है जिसको कंपनी ने आपके लिए लॉन्च किया कि आप इसमें से बेनिफिट उठाएं, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी बनने जा रहे हैं जो एक पूरे इकोसिस्टम को कवर करेगी, हर प्रोडक्ट को, हर सर्विसेज को, जो आपकी नीड होगी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी. सो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है कंपनी की तरफ से. आई वुड लाइक टू से थैंक्स on behalf of Metherians, on behalf of all our network, to Mr. Denise for taking this such a big initiative. This is not a small thing. You took such a big initiative. This was the need of the market. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट को इस वक्त नीड थी, एंड मिस्टर दिनेश, यू डिलीवर्ड जस्ट ऑन राइट टाइम. सो थैंक यू सो मच. Thank you for that. Thank you for your kind words. So now, after these slides, after
my input about Robot X. You may raise some questions, you may have some questions, and here are some of the frequently asked questions. But I can tell you one thing, these questions will be answered and many more different details on our Probot X website. I hope you can see my screen and the website itself. Here on this website, you can find a detailed explanation and more information. So now after this call, when this will finish, what do you have to do? Very easy. So you have just to go back to the person who invited you into this call today and ask for more detailed information, and they will guide you through the process itself and guide you how to use Robot X. So from my side, that's my input. That's the official soft launch of Robot X. I'm very, very proud. You will see a big movement in the market because this is something that is happening out there for a couple of months. It is a trend right now in the market, and I can proudly say that we had again the right intention back then when we started developing this and testing this, because we knew that the market will require something like this. And ladies and gentlemen, congratulations to everyone, and from my side, a big thank you. My name is Dennis, CEO of Methan M20, and I wish you a great evening. Thank you. Thank you so much, Mr. Denise. And we also have a very important guest who is in the call right now. और अब मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हम बुलाएंगे अभी कॉल के ऊपर, और वो हमारे साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इस कॉल को भी लीव ना कीजिएगा, कॉल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाने से पहले जो मिस्टर दनीश की जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। मिस्टर दनीश ने यही कहा, हमें आपने वेबसाइट को देखा और आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा आपकी अपलाइन से। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये प्रोबोट एक्स कैसे काम करेगा, आप इसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो आपको जिस जिस लोगों ने ये लिंक शेयर किया उनको अप्रोच कीजिए। वो आपको गाइड करेंगे कि इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, क्योंकि ये जैसा कि मिस्टर दनीश ने हमें वेबसाइट दिखाई, इसकी कंप्लीट डिफरेंट वेबसाइट रहने वाली है, कंप्लीट डिफरेंट बैक ऑफिस रहने वाला है, कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आई थिंक ये आपके पास अभी समय है कि आप स्ट्रेट अवे इसको स्टार्ट कीजिए, राइट नाउ इस कॉल के बाद स्ट्रेट अवे इसके ऊपर काम कीजिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप उठाएं। सो आप सबका शुक्रिया इस कॉल पे आने के लिए, मिस्टर दनीश ने ये कहा। अब मैं बुलाना चाहूँगा जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आई थिंक प्रोबोट एक्स के अंदर जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि हमारे जो हेड हैं प्रोबोट एक्स के, जो इसको लीड करेंगे। देखिए, हमने प्रोबोट एक्स के बारे में बहुत सारी डिस्कशन की, लेकिन ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करें जो कि हमारे हमारे इस मेन प्रोडक्ट के जो हेड करेंगे और जो ऑलरेडी क्लियर्स को हेड कर रहे हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी क्लैप से उनका वेलकम कीजिए। Could I please welcome the person who was the reason behind a Clios education as well as Probot X. I would like to invite you, and later on I will translate you. इनके स्पीच के बाद मैं इनकी जो भी बातें हो रहने वाली हैं उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी के अंदर ताकि आप सबको समझ आ जाए। I would like to invite Mr. Cliff Chacona to please come on the call and share your thoughts with us, sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay. Thank you so much for having me. I was enjoying this call, but I will not keep it too long. Hello, everyone. The only thing I want to tell each and every single person listening to me now is this. You can tell people the right assets to buy and sell, and they still won't be able to make money. Why? Because trading isn't just about knowing what to do. It's about having the right structure, the right timing, the right entry, and the exit, and most importantly,
managing your emotions and risk consistently. And that's what Probot X has mastered. Let me put it that way. You see, it's not about trying to reinvent trading. It's about understanding that trading is a game of probabilities. You see, the markets repeat the same structure over and over. They are just on different scales. Now, when you can tap into that with the right tools, everything changes. You see, what makes Probot X stand out is every single time I see that part of the presentation, I'm excited, is the ACVD that was presented to you guys, the risk management approach. You know, this is where most of the companies get it wrong. You see, most of the companies either have the right best automation system and the wrong human skilled individual, or the right human skilled individual, or the wrong automation system. But here at Probot X, it's a hybrid. You get the best automations combined with skilled human experts, a whole team behind this. And that is what makes all the difference. You see, it's a system, it's a solution that understands what is needed to succeed in the financial market. For any risk management, strategy to work, you have to be able to eliminate greediness. And that is what every single time we are talking about Probot X, it's about you understanding it's a realistic system that is here to give people passive income. Now, I can't wait to see your faces when you are smiling and you are experiencing the system that we have for you guys. As I said, I'm not going to take much of you guys your time. I'm super excited, and I'm going to pass it on back to Mr. Forward. And I just want people to know how excited I am for them to experience this as well. Sure. But before you go ahead, and I would like to say to you right now, we have over 5,000 people watching you live, because we have 1,000 on Zoom call, and I just check over 1,500 over YouTube, and then we have Instagram live, and then Facebook live, as well as this call is being translated into a French language. With the people are not on this call, but they've been joined on a different Zoom link. So there's a Wow. lot of people who are on this call, because it's such a big call. And I would like to Right. say thanks to everyone who have joined us, who are listening to us. Thank you so much. Thank you, Mr. Cliff. And I will translate and I will end this call. Thank you, sir. देखिए, मिस्टर क्लिफ ने बड़ा ही अच्छा मैसेज पास ऑन किया हम सब के लिए, कि देखिए कोई भी चार्ट को देख सकता है. अगर आप चाहें चार्ट को देखना, आज आप चार्ट को देखेंगे कि आपको पता होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग लॉसेस लेते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए, चार्ट बार बार वो ही गेम खेलेगा. ये गेम है. ये बार बार वो ही पैटर्न आपके सामने लेके आएगा. ये बार बार वो ही चीज आपको दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे एज अ ट्रेडर. इसके लिए आपको स्किल सीखने पड़ेंगे कि मार्केट आपके साथ कैसे बिहेव करेगी. ऐसे ही जैसे अगर आपने डॉक्टर बनना है, तो आपको 8 से 10 साल लगाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर. और इसी तरीके से अगर आपने आज लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए भी आपको 6 से 8 साल चाहिए. अगर आपने एक अच्छा पायलट बनना है, उसके लिए भी आपको समय चाहिए एक अच्छा पायलट बनने के लिए. इसी तरीके से अगर आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है, वो ट्रेडर बनने के लिए भी आपको समय चाहिए. आपको टाइम चाहिए समझने के लिए, सीखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट करने के लिए. कि एक ऐसा चार्ट है जो मिस्टर क्लिफ भी देखेंगे, जो हम भी देखेंगे, शायद हम दोनों सेम डिसीजन लें. जो उन्होंने डिसीजन लिया और जो हमने लिया, हमने सेम डिसीजन लिया, येट हमने पैसा नहीं बनाया, लेकिन मिस्टर क्लिफ ने बनाया. क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एंट्री पे पैसा नहीं बनेगा, एग्जिट पे पैसा बनेगा. ये बात समझिएगा कि जब आप एग्जिट लेंगे मार्केट से, वो टाइमिंग क्या रहने वाली है आपकी. तो ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो आप प्रोबोट एक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीखने में क्या मिलेगा. ये वो चीजें हैं जो मिस्टर क्लिफ आपको सिखाएंगे, या इनकी जो प्रॉपर ट्रेडिंग टीम है,
یہ آپ کو سکھائے گی. ہندی کے اندر اویلیبل رہنے والی ہے یہ ٹریننگ. آپ سیکھیے گا, سمجھیے گا کہ کس طریقے سے آپ ایونچولی, میں یہ نہیں کہتا آپ کل ٹریڈر بن جائیں گے یا 6 ماہ بعد بنیں گے, لیکن اگر آپ کنسسٹنٹلی سیکھتے رہیں گے تو آنے والے 1 سال, 1.5 سال, 2 سال میں آپ ایک اچھے پروفیٹیبل ٹریڈر بن سکتے ہیں. ڈپینڈ ہے آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے سیکھنے میں. اسی کے ساتھ اگر ہم مینیج ٹریڈنگ کی بات کریں, جو مسٹر کلف نے یہ بتایا, اگر ہم مینیج ٹریڈنگ کی بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا رسک مینجمنٹ. آپ نے رسک مینجمنٹ پہ کتنا فوکس کیا ہے. تو مسٹر کلف نے یہی کہا کہ پروبوٹ ایکس دنیا کے اندر ایک واحد ایسا پروڈکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جن کا جو مین فوکس ہے وہ رسک مینجمنٹ کے اوپر ہے. کمپنیز کا فوکس ہوتا ہے پروفٹ لاس کے اوپر, پروبوٹ کا فوکس ہے رسک مینجمنٹ کے اوپر. تو یہ شفٹ آف مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ کا ایک شفٹ ہے کہ آپ کا, وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. جہاں بھی آپ کا فوکس جانے والا ہے آٹومیٹکلی آپ کی انرجی اس طرف لگنے والی ہے. اگر آپ کا فوکس ہی نیگیٹیوٹی کے ہے, اوپر ہے, آپ کی انرجی بھی نیگیٹیوٹی ہوگی. اگر آپ کا فوکس رسک مینجمنٹ پہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ رسک مینجمنٹ کے اوپر آپ کی انرجی جائے گی اور آپ وہ ڈیولپ کریں گے کہ آپ سٹاپ لاس کیسے لگائیں گے, آپ ٹیک پروفٹ کیسے کریں گے, اور آپ مارکیٹ میں کب سائڈ پہ بیٹھنا ہے, کب مارکیٹ کے اندر بیٹھنا ہے, کب پروفٹ کمانا ہے اور کب لاس لینا ہے. یہ سارا سیکھنے سے آئے گا. اور ہمارے پاس, ہم بہت لکی ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پچھلے 10 سال سے زیادہ اس انڈسٹری سے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ پلیٹ فارم بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں پوری میتھر مینجمنٹ کے لیے اور پوری جو کارپوریٹ ہماری ٹیم ہے. مسٹر کلف, اگین once again we are so lucky to have such an educator like you. The way you break down things, we really appreciate, and we are super excited to have you on the calls more regularly so we can hear from you. We can try to pick some things from your brain and how you think about trading, how you execute your trades, how you come out of the market. So we will be learning from you as well. I would also say thanks to our beloved CEO, Mr. Danish Shahu. Thank you so much, sir, for giving us a great opportunity, a great product at a right time. I think this was the perfect time. There could not be any other time to launch ProBoat X in such a great time. I think market needs it. I think all the people need it, and I think this is just everything happening. Everything is falling into places in just the right time. I think, having said that, I would like to close today's call. And before I do so, I would like to say to all of you guys, after this call, go back to the people who asked you to come on the Zoom call, or start calling your upline and ask them how I can join, because this is going to grow so fast. آپ سب کے لیے یہ میسج رہنے والا ہے کہ آپ سبھی دوست اپنی اپ لائنز کو کال کرنا ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پروبوٹ ایکس ایک نیا پروڈکٹ ہے, اس کا ایک نیا بیک آفس ہے, اس کا ایک نیا سٹرکچر ہے. تو جو آپ کا ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے میتھر کے اندر, وہ سٹرکچر پروبوٹ ایکس میں نہیں رہے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اسٹریٹ اوے اپنی اپ لائن کو کانٹیکٹ کریں گے اور ان کے ساتھ لنک لیں گے ان سے, اور اسٹریٹ اوے پروبوٹ ایکس کو جوائن کریں گے. آپ کی رجسٹریشن بھی دوبارہ سے ہوگی, آپ دوبارہ سائن اپ کریں گے ایسا ہی جیسا آپ نے میتھر میں کیا. دوبارہ سے آپ کی آئی ڈی بنے گی, دوبارہ سے آپ کا اسٹرکچر لگے گا. تو آئی تھنک اٹس گریٹ چانس, آپ کے پاس چانس رہنے والا ہے. دوبارہ سے اسٹرکچر لگائیے, فوکس ہو کے کام کیجئے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایک کلین شیٹ آ گئی. اب آپ کے پاس آج سے 3 اکتوبر 2024, آج آپ کے پاس ایک کلین شیٹ ہے. آپ جیسے چاہے اس کو بلڈ کیجئے, جیسے چاہے اس کو ڈیولپ کیجئے. جو مسٹیکس, جو غلطیاں آپ سے پہلے ہو چکی میتھر کے اندر, اب آپ کے پاس ایک چانس ہے, اوپر والے نے آپ کو ایک چانس دیا کہ ان کو آپ فکس کر لیجئے. کیونکہ دیکھیے, کئی لوگ میتھر میں آئے اور کئی لوگ چلے گئے, اور کچھ لوگوں نے جوائن ہی نہیں کیا, کچھ لوگ ڈرتے ہی رہ گئے. لیکن کیا ہوا, جن لوگوں نے بلیو کیا, ہمارے بیلوڈ اسپارٹنز, ہم سب سے ملے دبئی میں, جن لوگوں نے بلیو کیا, آج وہ ملٹی ملینئر بن کے سامنے آئے. آج آپ کے پاس دوبارہ چانس ہے. یہ نہ ہو کہ آنے والے سمے میں, آنے والے 4 سال میں آپ دوبارہ بیٹھے ہوں سیم سٹیج پہ اور سوچ رہے ہوں میرے پاس دوسرا چانس بھی تھا, میں نے وہ بھی مس کر دیا. آج آپ کے پاس آخری چانس ہے, شاید ایسا دوبارہ میتھر کی لائف میں نہ ہو. اور
آپ کے پاس چانس ہے کہ آج آپ کے پاس ایک کلین شیٹ ہے. آج سے دوبارہ فوکس کیجئے, اپنی آئی ڈی کو لگائیے, اپنا آن بورڈ کیجئے, اور اس کے ساتھ ہی اپنی ٹریننگ لیجئے. ہمارے جو ٹرینرز ہیں مسٹر انوراگ گیرا جی, مسٹر ساجوان جی, وہ آلویز آپ کے ساتھ اویلیبل ہیں, ان سے گائیڈنس لیجئے. اس کے ساتھ سارے ہی اسپارٹن لیڈر ہم سب سے ملے دبئی میں, سب کو بٹھا کے گائیڈنس دی, ایکسپلین کیا, ان کے کویشچنز کا آنسر کیا. وہ بھی آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, ان ٹچ ہیں, آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ, آپ کے پاس ایکسیس ہے, ہماری ایکسیس ہے آپ کے پاس, ہم اویلیبل ہیں آپ سب کے لیے. آپ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم بھی آپ کی ہیلپ, سپورٹ اور گائیڈنس کے لیے ہر اسٹیپ آف دا وے اویلیبل ہے. اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ اب ہم اس کے فالو آن ہم ایک اور کال رکھیں گے آپ سب کے لیے, جو کہ ہوگی کمپلیٹ انٹائر پروبوٹ ایکس کے بیک آفس کو لے کے, جیسا کہ بیک آفس کی ٹریننگ کو لے کے, جیسا کہ اسٹرکچر کو لے کے, پوزیشننگ کو لے کے, تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے کہ یہ بیک آفس کیسے کام کرے گا, یہ بیک آفس میں پوزیشن کیسے جائیں گی, کمیشن کیسے آئے گا. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, اپنی ڈاؤن لائن کو آج ہی کال کیجئے, ان کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیجئے, ان کو بتائیے کہ کمپنی نے کتنا بڑا انیشیٹو لیا اور آپ کے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی آپ کے سامنے ہے. تو پلیز اس کو سمجھیے گا, ایک بہت ہی ایکسائٹنگ نیوز ہے. اس کو آن بورڈ کیجئے, اس کو امبریس کیجئے, اور اپنی کامیابی تک پہنچیے, اپنے گولز ڈریمز کو اچیو کیجئے. کیونکہ آپ کے بدلنے سے آپ کی پوری فیملی, آپ کے پورے پڑوسی, آپ کا پورا محلہ, آپ کا پورا کنٹری چینج ہو جائے گا. یہ صرف ایک بندے کی ایفرٹ ہے, اور آپ اپنی فلم کے ہیرو ہیں, تاکہ آپ کو لیڈ رول کرنا پڑے گا. دیکھیے, آپ اپنی گھر کی جو آپ کی فلم ہے اس کی آپ لیڈ رول ہیں, تو لیڈر کے لیے لیڈ کرنا پڑے گا. لیڈ آج سے کیجئے, اپرچونٹی آپ کے سامنے ہے, ٹیمز آپ کے سامنے ہیں, آنرز آپ کے سامنے ہیں. اس سے بڑھیا کیا ہے کہ آپ سب کچھ, آپ کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. ہم سب مل کے کریں گے, میتھر کو سکسیسفل کریں گے, ایم کوائن کو ٹو دا مون لے کے جائیں گے, جو ہمارا گول تھا آج سے 4 سال پہلے, آج بھی وہ گول ہے. ایم کوائن کو مون پہ لے کے جائیں گے, رائزر کو مون پہ لے کے جائیں گے, پروبوٹ ایکس کو بھی ان کے ساتھ مون پہ لے کے جائیں گے. تو آپ سبھی سے میں اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ, کہ ہم سب مل کے, آپ بھی, ہم بھی, مینجمنٹ بھی, اور لوگ بھی مل کے جب جڑیں گے, تو آئی تھنک سکسیس ہمارے قدم چومے گی. آپ سب کا شکریہ اس کال پہ آنے کے لیے. تھوڑا سا سمے لگا, لیکن بات کو سمجھانا بہت امپورٹنٹ تھا آج کی کال کے اوپر. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ونس اگین السلام علیکم, نمسکار, ست شری اکال. جہاں رہیے خوش رہیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. وی آر ون, وی آر میتھر.